how often do you remember all your tweets? Everyone does mistakes. Right. But if you learn and if you continue further, that's life. 2-3 साल बाद अगर किसी को कोई पुराना ट्वीट उठा के मतलब कंट्रोवर्सी करनी है क्योंकि वो कर लेगा. मैं अपने लाइफ में 10 साल पहले बहुत चीज़ें करती थी जो मैं अब नहीं करती. एंड आई एम प्राउड ऑफ हाफ ऑफ देम, आई एम नॉट प्राउड ऑफ हाफ ऑफ देम. अच्छे कॉमेडी के लिए अच्छी राइटिंग कितना इम्पोर्टेंट है? Is extremely important. George Washington in Hamilton said, "The history has your eyes on you." We have with us Comicstaan 3. Everyone has loved the first 2 seasons, and we have with us Anu, Sapan, Abish Matthew, Rohan, and Prashasti. Pleasure having you guys with us on Bollywood Hungama. Thank you so much. And my first question to you is, Abish, is that how often do you remember all your tweets which may be controversial that you may have tweeted like say 9 years back? Probably not. It's times change, you change. Honestly. So you move ahead. So I think what happens is 10 years later, whatever I'm doing right now, I'll be like, kya kar raha tha yaar? It's such a seek leta. So it's about the churn. You're always in the churn. Like they say in the Amazon series, where Rosinante, the Expanse. It's always a churn. कभी ऐसा होता है कि आप अपने ड्राफ्ट में देखते हो ट्विटर पे कि यार थैंक गॉड कि ये ड्राफ्ट में ही रह गया? नहीं, ट्विटर पे तो कभी ड्राफ्ट नहीं डालता है. अच्छा. ड्राफ्ट तो मैं ईमेल पे भी नहीं डालता हूँ. कोई भी जगह कुछ लगता है कि मम्मी पापा बुरा बोल देंगे तो वो डिलीट हो जाता है. पर अमीश को जो ट्वीट से लगता है मुझे अपने स्टैंड अप के साथ भी लगता है और 10 साल नहीं 2 साल बाद भी यार मैं क्या कर रहा था 2 साल पहले. Yeah, exactly. बहुत होता है. Which is a good sign, right? Because you're growing then. Everyone does mistakes. Right. But if you learn and if you continue further, that's life. Right. But it's not a matter of maybe growing up, but at times क्या होता है ना कि आपने 2 साल पहले 3 साल पहले आपने कुछ आपने किया हो, जैसे for example. Oh, me? I think No, I'm looking at I'm doing it. So आपको लगता है कि उस वक्त मतलब ये that was all in good humor, but you never know like say 2-3 साल के बाद में कौन जो है वो उसको कुछ लगे कि ये इसमें वो था जो आपने सोचा भी नहीं था. अगर वो होने वाला है तो वो होने वाला है. In the sense that I guess like Abish said, if you sort of moved on from it, one reason I guess why was it controversial? Did you really say something that was controversial, or now have the times just changed in a way where now that innocuous statement has become controversial, right? I guess, and in that same way it comes down to देखो 2-3 साल बाद अगर किसी को कोई पुराना ट्वीट उठा के मतलब कंट्रोवर्सी करनी है क्योंकि वो कर लेगा. मैं डिलीट करूँ, मैं सोचूं नहीं सोचूं, मतलब वो होने वाला है. तो आई कैन ईदर लूज स्लीप ओवर इट नाउ और आई कैन बी लाइक आई लूज स्लीप ओवर इट इफ एंड व्हेन इट डज हैपन. एंड आई थिंक द रेस्ट ऑफ इट विद अबीश, like Abish said, comes from, I think it's good in a way if you look at everything you did 2 or 3 years ago and go, wow, not now. I wouldn't do that. I've moved past that, etc. So yeah. But you're also looking at it with different eyes, right? Even Of if course. you look at popular sitcoms also, like a generation that watches Friends today finds a lot of it problematic. But when we were watching it, perhaps we didn't think so. So I feel like the lens also changes with each passing year on what is acceptable or not acceptable, or what passes or what doesn't pass. All right. Okay. What about you? आपके क्या फीलिंग है? आप काफी देर से आप शांत बैठे हुए हैं डिस्कशन से. मेरा तो अभी करियर ही बहुत छोटा है ना, तो अभी मैं गलतियाँ करने स्टार्ट कर रही हूँ. Right. So I really feel कि it's like हम सब लोग बड़े होते हैं, हम सब लोग सीखते हैं. The problem, I think one of the concerns with our career is कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं वो I think बहुत पब्लिक में हो जाता है. Like कि मैं अपने लाइफ में 10 साल पहले बहुत चीज़ें करती थी जो मैं अब नहीं करती. बट वो 10 चीज़ें मैं ऑफिस में करती थी, कॉलेज में करती थी, राइट? एंड आई एम प्राउड ऑफ हाफ ऑफ देम, आई एम नॉट प्राउड ऑफ हाफ ऑफ देम. एंड द थिंग विद अ करियर इन पब्लिक आई इज दैट वट एवर यू ट्वीट, वट एवर द जोक्स यू मेक, वट एवर, आज हम रीलें भी बना रहे हैं इतने इनोसेंटली, कल को क्या पता 10-5 साल बाद कोई मुड़ के बोले कि ये तो सही नहीं था जो आपने किया था. But on a, I think what she's saying about say Instagram reels, so एक thought मेरे mind में आ रहा है, I'm just putting it out. मैं आपसे पूछना चाहूँगा. For example, I think maybe I think Instagram story is slightly like a safer bet. कि वो 24 घंटे में वो गायब हो जाएगी, मोर और लेस हो सकता है शायद स्क्रीनशॉट ना ले पाए. हम सोचते हैं स्क्रीनशॉट पहले लगता है. हाँ. मैं प्रोबेबिलिटी में. Someone has taken a screenshot. That's why we have to take the story down. Because of the screenshot. With 1 hour left to go for the story Right. live. It's like someone said, right? The new motto for living in the 21st century is live your public life like it's going to be screenshotted.
That's really profound. Live your public life. George If a from screenshot of this experience. showed up. If a screenshot of this showed up. Yeah. Okay. George Washington in Hamilton Yeah. said, Said. "The history has your eyes on you." So So yeah, I That's think right. it's थोड़ा वैसा है. I think on that note मैं आपसे पूछना चाहूँगा अभीश, अच्छे कॉमेडी के लिए अच्छी राइटिंग कितना इम्पोर्टेंट है, अच्छा रीडिंग एलिमेंट कितना इम्पोर्टेंट है? if you say good writing is important, personally मेरा definition थोड़ा अलग है. Like I would say, writing, performance and personality का जो स्वाद अनुसार जो आपका mix रहेगा is what makes you truly unique. So आप जितना writing में focus करोगे, you could become a very good comedic writer. वो आपकी voice है. जैसे I like to perform more, so if I work on that a little bit more, some people have greater personalities. So I think it's important. It's the backbone of a good comedic performance, but the other two are also important. It's the muscle and the skin. If I could add actually to what Abhish said, one more thing I'd add even before the writing stage, I think more than reading to what you are, is observation. Yeah. Right? Like I think that's something that Akhil also said in the press conference where he's like, like your eyes open. I think that's where it begins. More than reading, because I know a lot of comics who don't read, but they're very keen students of just the world around them and the craft. And that honestly sometimes is enough. Also as a starting point. Also to tell the contestants, like sometimes a joke they've written is so brilliant. But the point is you also have to sell that joke. So it's not enough to just write it, right? So you always have to be proud of it and sell it in such a way that as a package that it reaches us. I genuinely felt when I started doing comedy that it sort of made me free of language. Like the observations and thoughts, like just that much was sort of enough. कि English, Hindi, mixture, expressions, वो सब मिला के कुछ तो निकल के आता है अगर आपका ऑब्जर्वेशन और थॉट बहुत एक्यूरेट है ना कि उससे ही अपने आप ऑडियंस में रिटर्न आती है. तो ऑफ कोर्स देयर इज मेरिट इन गुड राइटिंग, गुड रीडिंग एंड ऑल ऑफ अस डू दैट एज वी ग्रो, बट वन ऑफ द ह्यूज एलिमेंट्स ऑफ कॉमेडी इज कि उसके बियॉन्ड भी बहुत कुछ और है. सपन आपसे मैं पूछना चाहूँगा, जैसे ऑब्जर्वेशन की बात करी, रीडिंग की बात हो गई, राइटिंग की बात हो गई, परसेप्टिव होना कितना इंपॉर्टेंट है कॉमिक राइटर्स के लिए, इंट्यूटिव होना कितना इंपॉर्टेंट है? I think वही मतलब it comes down to observation and also understanding EQ, IQ सब बहुत ज़रूरी है. You have to understand the emotion of a joke also. I think it's extremely important, not just for I think a comedian, for any kind of creative person, even as a writer, as a director also. I think being perceptive, understanding not just the content of it, but the mood of it, the scene of it is extremely important. And I think continuing in what these guys are saying, I think अगर आप हम में से किसी का भी फ़ोन चेक मत करना, पर अगर करोगे तो नोट्स फोल्डर होगा, सबके पास कुछ ऑब्जर्वेशंस लिख रहे होंगे. आज किसी ने कुछ देखा होगा, किसी ने नोट करा होगा, किसी ने ट्रैफिक में कुछ देखा होगा, नोट करा होगा. So we all do this thing of. Yeah, I think all our phones have that one section in the notes folder. Very weird. If we died mysteriously, and someone decided to go through our phones, you would draw the portrait of a severely fractured, Individual. fragmented individual, because there's just sentences like ice cream machine dolphin. Yeah, it's just that. और इसका शादियाँ कभी चलती नहीं है. और ये रात के 2 बजे लिखा होगा, मतलब सोते वक्त जो आया थॉट में, तो ये बहुत है हमारे पास. So I think वो शुरुआत वही होती है कि ऑब्जर्वेंट होना. सबसे पहली बात तो ये कि आपको कुछ भी टॉपिक पिक करना है या स्टोरी पिक करना है, so हमेशा ऑब्जर्वेशन इज द फर्स्ट and is your seed of a germ of an idea. And then when you sit to write, everybody is different. Like if Abish is a stronger performer, he will think of how does he perform that joke. But if I am more of a writer, I'll think what is the emotion, how do I make it perceptive in the writing, कि what do I want to communicate apart from the joke. क्योंकि आपसे एक joke नहीं बोल रहे, आप शायद उसका एक मैसेज भी कन्वे कर रहे हो subtly. So you have to think of those things, and that everybody's styles comes out in that. Very different.